So I will not be discussing any book list here because enough of book lists are already available in the market. And moreover, it is not about books now. It's about the general orientation that students have. Books, almost everyone is reading the same book, और वही same book पढ़ के one student can get very good marks, and the other student will get very poor marks by reading the same book. So book list does not matter as such now. So the general orientation, I'll start it now. Okay, let me share the screen. Okay. I hope that screen is visible to all of you. I've put the meeting in recording also, so that later if someone wants to watch, they can watch it. Just a second, I'll again share it because. Okay. So road to 2023, UPSC 2023 and 24 also we are targeting. So basically UPSC is called unpredictable exam. Unpredictable is it means that you cannot predict what they will ask. Actually unpredictability is the predictability of this exam now. कि अगर आप ये this is the thing I'll discuss about Phoenix also. ये चीज मैंने पहले भी बोली थी कि अगर आप पहले से ही unpredictability को predict करके जाओगे कि it will be an unpredictable exam, then you will have a right mindset. And this exam very much depends on mindset right now. Many of the students, many of the candidates who have qualified this exam, time and again they have said the same thing, that it was their mindset which made them clear this examination, the kind of mindset that they have. Okay, so especially for prelims part, it is very, very unpredictable. Second thing is 96% of UPSC candidates. So out of 100 students who will be giving UPSC, 96 students will never even give prelims. They will never qualify. They will never qualify your prelims itself. So 96%, it is a big number of students. They are not qualifying prelims itself. Okay. Then there are some students who are irregular. Irregular means in first attempt they will not qualify prelims. In second attempt they will qualify. Then again in third attempt they will not qualify. So they are inconsistent in their prelims or in their mains. Okay. So there are certain loopholes that is present in their preparation. Okay. And so in this scenario, जब यहाँ पे इतनी unpredictability है, तो in this scenario जो एक smart candidate होगा, they will take step which will maximize their potential, which will maximize their everything which they are putting in their examination. So they will not take chances. What I'm saying is कि जो एक smart candidate होता है ना, वो आपका जो luck factor होता है exam में, उसको reduce करता है, not just in UPSC but in any other exam. If you will reduce the luck factor, then automatically you will be doing good in your final examinations. Okay, so this was the first thing. Second, UPSC 2017 से 2022 तक it has become very, very dynamic, I will say, very dynamic and very unpredictable. Okay, because why it is unpredictable? What unpredictable means कि आप predictability कहाँ से लाते हो? From where you want to bring predictability in exam. दो जगह से आप sources जो पढ़ते हो, अगर आप कोई book पढ़ रहे हो, for example आप NCERT पढ़ रहे हो, ठीक है, 8th class की, so you are expecting कि questions इससे फंसेंगे. सेम चीज अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो फॉर पॉलिटी, तो यू आर एक्सपेक्टिंग कि क्वेश्चन इससे फंसेंगे, ठीक है, बट जब वो क्वेश्चन नहीं फंसते हैं, देन इट ब्रिंग्स एन एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी कि जो हम चीजें पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो वो फंस ही नहीं रहा है, वो क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, देन हाउ वी विल टैकल दिस एग्जामिनेशन. ओके, so this is the unpredictability which I'm talking about. So exam has become random. There is no doubt in this thing that this UPSC exam has become very, very random. They're asking randomly, and it is good thing also, bad thing also. Why is it good thing? Because if they will not ask random questions, then जो first attempt पर है और जो sixth attempt पर है, उनमें कोई competition ही नहीं है. A first attempt पर can never compete with a sixth time attempt पर in basic books, yeah, in general knowledge also. So it is a good thing also, it is a bad thing also. Bad thing is because you cannot predict from which source they will be picking up the questions, right? However, even if there is a randomness, there are certain areas in this exam from where students can maximize their score and they can lock their seat in final list, not just in prelims, not just in mains, but in the final PDF. You can still qualify this exam agar jo areas hain,
certain areas जिनको आप लॉक कर लोगे. फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी विच इज हैज ऑलवेज बीन वेरी वेरी प्रिडिक्टेबल. सेम विथ इकोनॉमी. ठीक है. सेम आई विल डेयर से सेम विथ एंशिएंट इंडिया आल्सो. एंशिएंट इंडिया, इफ यू विल रीड द राइट सोर्सेस, it is very much a predictable part of the examination. So अगर इन areas पे you are scoring good in your prelims examination, ठीक है, तो you will easily qualify this examination. ठीक है. इस एग्जाम को फिर then there is no way कि you anyone can stop you from this, from clearing this exam. Okay. Now एक चीज आप और देखो, फ्रॉम 2017, दिस आई डिस्कस्ड अर्लियर आल्सो, फ्रॉम 2017 टू 2022 अगर आप एक ग्राफ बनाओगे तो द नंबर ऑफ स्टडी मटेरियल जो था, जो 2017 में जो बुक्स मिलती थी और जो 2002 में 22 में जो बुक्स मिलती हैं, दे हैव ग्रोन मल्टीपल टाइम्स. पहले इतनी ज्यादा गाइडेंस थी ही नहीं जितनी आज के टाइम पे अवेलेबल है फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरी subject. You have n number of study materials. There is no dearth of study material in today's time. Okay. So अगर ये चीज है, but at the same time if you will see, तो जो UPSC का कट ऑफ है, it has decreased over the time कि 117 2016 से लेके and it has reached till 80s में पहुंच गया है. ठीक है. So what ये जो ग्राफ, ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या शो करता है कि there is no correlation between the study material that you are getting even from the best of the coachings, कि जो आप study material पा रहे हो and the questions that are being asked in UPSC, there is no correlation. सिंपल सी बात है कि आपका जो बेसिक स्टडी मटेरियल है और जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इवन इफ इट इज इंक्रीजिंग, इवन इफ यू आर गेटिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी अट्रैक्टिव पीडीएफ्स, but they are not helping you in the examination, in the final examination, whether it is prelims or whether it is mains, even though it is a largely predictable. mains में आपका skill matter करता है ना, जो and it can be, मतलब skill जो है वो achieve किया जा सकता है, but जो pre है it is very very difficult now, right now, है ना. तो ये exponentially हुआ है. and then mains में मेन चीज होता है to finish syllabus. mains में predictability is there, चाहे आप ऑप्शनल की बात करो, whether you're talking about optional और whether you're talking about general studies, जो आपका मेंस है वो more or less it is very predictable, right? So you can predict the kind of questions that they will be asking in mains. So यहाँ पे आपका skill matter करता है. skill में मतलब कि the amount of study that you have done and the amount of content that you can put in those 3 hours. Okay, these are the two things that matters in the mains. ठीक है. सो 2023 या 2024 के जो स्टूडेंट्स हैं, वो उनको क्या करना चाहिए, व्हाट शुड दे डू. सी, अगर हम जो टीचर्स हैं, हम जो मेंटोर्स हैं, वी कैन आल्सो गाइड यू. दिस इज नॉट अ यूनिवर्सिटी एग्जाम, दिस इज नॉट अ स्कूल एग्जामिनेशन कि जहाँ पे आपको हर चीज पढ़ा दी जाएगी. और यहाँ पे आपका जो एफर्ट है, इट इज अराउंड 80% आई विल से, और जो मेंटोर का काम होता है वो होता है 20%. ओके. सो देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच इफ यू विल डू, बिकॉज वी कैन नेवर डू दैट थिंग, वी कैन नेवर कवर दोस थिंग्स फॉर यू बिकॉज इट इज लिटरली इम्पॉसिबल. ठीक है. तो स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए ऑन देयर ओन. फर्स्ट इज न्यूज़पेपर. दिस आई हैव ऑलवेज सेड दिस थिंग. जो लोगों ने फिनिक्स ज्वाइन किया था, वी विल डिस्कस अबाउट फिनिक्स आल्सो, तो उनको मैंने पहले दिन से कहा था कि जो न्यूज़पेपर है, नेवर स्किप इट, नेवर एवर. सी, देयर विल बी डेज कि जब आपका बिल्कुल पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा, यू विल बी एग्जॉस्टेड, यू डू नॉट वांट टू स्टडी एनीथिंग, आपके अंदर एक भी मोटिवेशन नहीं होगा पढ़ाई करने का, है ना. इवन ड्यूरिंग दोज डेज यू शुड हैव द मोटिवेशन टू स्टडी न्यूज़पेपर्स. ओके. क्योंकि न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है. दूसरी चीज, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो बी वेरी वेरी इंक्विजिटिव. इंक्विजिटिव का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना. जो जैसे एक छोटा बच्चा होता है, व्हेन स्टूडेंट, एक चाइल्ड जो नर्सरी वगैरह में होता है, दे आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. सिमिलरली यू शुड आल्सो आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल, अगर आप सपोज अग्नि प्राइम के बारे में पढ़ रहे हो, व्हिच इज अ न्यू मिसाइल. ओके. तो अग्नि प्राइम में यू शुड बी आस्किंग कि ओके, ये किस तरीके की मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल्स क्या होती हैं, एयर टू एयर मिसाइल्स क्या होती हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू काइंड ऑफ मिसाइल्स. ओके. सो व्हेन यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर, बी वेरी वेरी इंक्विजिटिव अबाउट व्हाट, हाउ, व्हाई. ठीक है. सो दीज थिंग्स विल क्रिस्टल. और ये चीज ना, इट नॉट जस्ट इन यूपीएससी, चाहे आप बाद में अपना स्टेट दे रहे हो, यूपी पीसीएस दे रहे हो, पंजाब पीसीएस दे रहे हो, हरियाणा पीसीएस दे रहे हो, या कोई डिफेंस का एग्जाम दे रहे हो, सीएपीएफ सीडीएस दे रहे हो, ये जो आपका नॉलेज बनेगा ना, इट विल ऑलवेज गिव यू एन एज ओवर अदर स्टूडेंट्स. एंड दिस इज व्हाट
जो एक टॉपर होता है या जो स्टूडेंट्स होते हैं who qualify this exam, this is the thing that differentiate this thing from the students who do not qualify or who struggle to qualify this examination. Okay, so newspaper is very very important. You have to read it by yourself. I will say do not watch any वीडियोस जो आज के टाइम पे वीडियोस आते हैं ना, डेली वीडियोस आते हैं करंट अफेयर्स के, बट ट्रूली बिकॉज न्यूज़पेपर यू हैव टू बिल्ड योर लैंग्वेज आल्सो. आपको जो आपकी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, उस पे भी कमांड लेनी है. यू विल गेट अ लॉट ऑफ गुड एग्जांपल्स, लॉट ऑफ anecdotes also which will be missed in the videos. So read it by yourself. इसको कैसे फन बनाना है, जब मैं न्यूज़पेपर सेशन लूंगा तो you will look forward to reading newspaper. ये आपके लिए हेडेक नहीं रहेगा. ठीक है. So that's what I said. It will help you in your CDS, ND, and other exams also. Now, and remember, second thing, what you should be doing is you should be consistent. ठीक है, हम सब ने टर्टल और रैबिट की स्टोरी सुनी है कि in the end turtle wins. So ये जो stories होती है ना, they are not just stories, but they are wisdom of hundreds of years. ये सिर्फ कोई रैंडम स्टोरी आपको नहीं सुना रहा है ना. They contains wisdom, true wisdoms की जो स्टूडेंट कंसिस्टेंट होता है ना, केवल रोज +1 गेन कर रहा है, दे आर द वन हु आर क्वालिफाइंग दिस एग्जाम. ठीक है, दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं. फर्स्ट हु विल बी इनकंसिस्टेंट, ठीक है, उनके अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं होगा, एंड देन दे वांट कि सर मैं तो 12-13 घंटे पढ़ूंगा एंड आई वांट टू क्लियर दिस एग्जाम एंड आई विल डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. एंड देयर आर सेकंड स्टूडेंट हु विल बी वेरी काम, और वो रोज अपना 6 से 8 घंटे पढ़ाई करेंगे, जो भी पढ़ाया जाएगा दे विल रिवाइज इट एंड देन दे विल इजीली क्लियर द एग्जाम. है ना, दे आर टर्टल्स एंड टर्टल्स आर द वन हु आर विनिंग, नॉट द रैबिट्स. रिमेंबर दिस थिंग. So you have to be turtle. Next, learning from Phoenix 2022. So this year at January 4th January 2022, I started one program जिसका नाम मैंने रखा था Phoenix. ठीक है, Phoenix was for the students who are not able to, who are struggling to qualify prelims. Okay, जो ये था, इस बैच पे around 80% of the student this year have got 90+ marks. मतलब they have done exceedingly well. ठीक है, and around 70% of the students have qualified prelims this year. So that gave me a lot of confidence, because before this even I was guiding students, but I did not know that whether it will help them or not. But when I saw this score and when I saw that genuinely students have improved their score, so it boosted my confidence also, especially students जो कि 4th, 5th, 6th attempt में थे and they were not clearing prelims. There are 2 students I personally know who were in their final attempts, and this is the first time they will be writing mains. So it feels very मतलब बहुत ही content feel होता है when you are helping students, especially who are in the last phase of their preparation, कि you help them write mains, right? Out of 80%, still a few students could not qualify prelims because of CSAT. So CSAT has become a very very important subject per se. You cannot just keep it inside and then study. You have to keep it in the center. Remember this thing कि CSAT को आपको सेंटर में रख के ही पढ़ाई करनी पड़ेगी, because it has become a very very big thorn in many students को. और इसको लेकिन अभी करने की जरूरत नहीं है. From January you can start it and then also you are good to go. You can easily qualify it, but just be consistent in CSAT. ठीक है, तो जो Phoenix था, the program which I ran, there are few things that was learning for me also, है ना, because not only you are learning but I am also learning. So what I learned was, first, guidance works, especially in today's UPSC. जिस तरीके का UPSC आज का हो गया है, you need guidance. Otherwise, without guidance, it is very very difficult to qualify this exam. Students are wasting their attempts without guiding, out of their ego or maybe because of some other reasons, that they feel that okay, I do not need guidance, I will study hard and I will qualify this exam. But I'm genuinely, it is not like you just join this course only, but if you can get guidance from any experienced candidate, take that guidance. Otherwise you will do a lot of mistake and you will take a lot of time to qualify this exam. ठीक है, तो पहली चीज है गाइडेंस वर्क करती है. सेम थिंग इन अवर मेंस आल्सो. मेंस में भी जो हमारा हरिकेन प्रोग्राम है, या जो अभी मैं PSIR का प्रोग्राम आई एम looking after that, तो उस पे भी students have exponentially increased their marks when we pinpoint their weaknesses or the problems that they are having. कि जो weaknesses है उनकी in the preparation, जब हम उनको pinpoint करते हैं तो they easily
improve their preparation, ठीक है. And finally giving tests regularly with feedback does improve marks, है ना. अगर आप tests दे रहे हो, regular tests दे रहे हो, and then you are getting feedback from those tests, so truly it improves your marks. Overall आपके जो marks होते हैं वो improve कर जाते हैं इसपे, ठीक है. Now जो ये प्रोग्राम के बारे में, इसके बारे में बात करते हैं. काइजन जो ये प्रोग्राम है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डज, हाउ द आइडिया ऑफ दिस प्रोग्राम केम. सो आइडिया केम फ्रॉम कि ये जो अभी आपका टाइम है जुलाई से दिसंबर का, है ना, दिस इज द गोल्डन टाइम. और लोग जो गलती करते हैं कि दे विल वेक अप ड्यूरिंग द जनवरी फेब्रुअरी टाइम कि सर नाउ आई वांट टू फुली फोकस ऑन प्रीलिम्स एंड आई वांट टू क्वालिफाई दिस एग्जाम. एंड द प्रॉब्लम दैट दे फेस ड्यूरिंग दिस टाइम इज कि सर मेरा ऑप्शनल नहीं कवर हुआ है, सर मेरा मेंस का जीएस नहीं कवर हुआ है, बट आई एम नॉट गेटिंग टाइम, आई एम नॉट एबल टू मैनेज टाइम बिटवीन जीएस एंड सीसेट, एंड एट द एंड दे स्ट्रगल. ठीक है. तो व्हाट सेपरेट्स टॉपर्स जो नेक्स्ट ईयर 2023 में जो फाइनल लिस्ट में होने वाले हैं, जो बच्चे क्वालिफाई करने वाले हैं एग्जाम, सो दोस टॉपर्स और जो अभी के जो स्टूडेंट्स हैं हु विल नॉट क्वालिफाई दिस एग्जाम, उन पे डिफरेंस ये है कि जो टॉपर्स है दे विल यूटिलाइज दिस टाइम प्रॉपरली जुलाई से दिसंबर, बिकॉज आफ्टर दिसंबर जनवरी से मई तक तो every student becomes sincere, every student become very very sincere to कि they want to qualify this exam. But it is that during this time, that July to December, those students who are sincere, they are the one who are qualifying this exam. ठीक है. At this time जो जनरल प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस करते हैं वो होता है इनडिसिप्लिन, स्पेशली अगर वो घर से प्रिपरेशन कर रहे हैं या लाइब्रेरी से कर रहे हैं. सो समटाइम्स दे विल स्टडी अ लॉट, समटाइम्स दे विल नॉट स्टडी दैट मच, देन दे विल हैव अ जनरल confusion over what to study, what not to study. Then they will have a general sense of disillusionment also, कि whether I have the ability to qualify this exam or I can qualify this exam or not, है ना. ये चीजें are, these are very wrong. Actually you are thinking in a very wrong direction, and I'll tell you why. Okay. So जो इस टाइम होता है स्टूडेंट, they do not get time कि वो अपना ऑप्शनल भी टाइम पे नहीं कवर कर पा रहे हैं, जीएस भी नहीं कवर कर पा रहे हैं, they are not able to manage their time between optional and GS. Okay. कि ऑप्शनल और जीएस में कैसे बैलेंस करना है टाइम, दे आर फेलिंग इन दैट आल्सो. उसके बाद न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, देन देयर इज अ जनरल सेंस ऑफ कंफ्यूजन एंड स्ट्रेस, और एक कंटिन्यूअसली एक क्लॉक टिक करती रहती है इन देयर माइंड 24/7 they'll keep on thinking, they will not enjoy watching movie, they will not enjoy eating food, they'll keep on thinking कि I'm wasting my time, I'm wasting my time, I'm wasting my time. And in general जो sense of progress होता है वो zero होता है, they are not progressing in their studies at all. Okay. So and by the time they realize that they have to become sincere, it is already too late. Okay. January, February, and then it is very difficult to improve during that time. Okay. So just a second. So what if someone covers GS for you in a guided manner? ठीक है, कि अगर आपको GS कोई आपका कवर करवा दे in guided manner, that too just 2 hours a day, and that too just 4 days a week. For जो सबसे ज्यादा डर होता है स्टूडेंट को क्लासरूम में वो ये होता है कि it will take a lot of time. But suppose कि आप पूरा दिन you are just studying optional, ठीक है, एंड जस्ट इन इवनिंग फॉर 2 hours यू हैव टू टेक वन क्लास. उस 2 hour में आपको पीडीएफ्स में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा. यू कैन मार्क दोस पीडीएफ्स आल्सो फॉर फ्यूचर रिवीजन, एंड यू कैन देन गो बैक टू व्हाटएवर यू आर स्टडीइंग. आप न्यूज़पेपर पढ़ो, आप ऑप्शनल पढ़ो, ठीक है. यू जस्ट हैव टू रिवाइज, बिकॉज जो भी पढ़ाया जाएगा जीएस पे वो गाइडेंस के साथ पढ़ाया जाएगा. देन यू विल, योर कंफ्यूजन विल बी वैनिश्ड. आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा बिकॉज समवन इज कवरिंग जीएस फॉर यू. And the second thing will be that you are following a system. Okay. It is not that you are preparing on your whims. ओके, ये आपका विम्स में या विल पावर पे या सेल्फ डिसिप्लिन पे रिलाई नहीं कर रहे हो आपकी मेरे अंदर इतना मोटिवेशन है, आई हैव सो मच ऑफ विल पावर दैट आई विल स्टडी सो मच, बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी टेम्परेरी. बी वेरी प्रैक्टिकल इन एग्जाम. ठीक है, दीज थिंग्स आर वेरी वेरी टेम्परेरी. आपका जो विल पावर होता है, जो मोटिवेशन होता है, ये एक टाइम तक ही काम करता है. इट डज नॉट वर्क इन लॉन्ग. सो इफ यू आर फॉलोइंग द सिस्टम, है ना, जैसे आर्मी में होता है, आर्मी में स्टूडेंट्स व्हेन दे गो 4 बजे उठना बहुत मुश्किल होता है, बट व्हेन द पनिशमेंट दैट दे विल प्रोवाइड, then automatically army men जो हैं, they become tough. So follow a system. If you will follow a system,
it will help you, ठीक है. और इस पे जो थर्ड फोर्थ अटेम्पर है, it will help them also. It is not just कि जो फर्स्ट या सेकंड अटेम्पर है उनको, every student who are in different phases of their preparation, it will help them, ठीक है. Now before I start कि what are the components of this program is, I will tell you some expectations that I have from my students, ठीक है. पहला है discipline. अगर कोई भी स्टूडेंट मूडी होता है कि some days they are studying 8 to 10 hours, someday they are not studying ever 2 hours, those student will never qualify this exam. So do not waste your time also, do not waste my time also. If you are willing to be disciplined, all I say is ki study 6 to 8 hours per day for next 5 months. 6 से 8 घंटे आप पढ़ सकते हो आराम से, ठीक है. तो इतना कंसिस्टेंसी तो आप ला सकते हो, इतना कंसिस्टेंसी आपको रखनी पड़ेगी. सो बी कंसिस्टेंट, दैट इज माय फर्स्ट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू. Second is trust in process. When we have started this program, whatever I am telling you, have faith in that process. जो लोग बहुत ज्यादा fluctuate करते हैं, they will jump from one part to another part to another part, they never qualify, ठीक है. तो whatever process you are following, trust in that process. Next, be honest. Be honest with yourself and be honest with me, ठीक है. क्योंकि whatever will happen, you can lie to a lot of people, but you cannot lie with yourself. At the end of the day, when you will go to your bed, जब आप सोने जाओगे, तो then you know that whether you have given your 100% or not. And similarly with me, if you will lie with me, you are not lying with me, you are lying to yourself, because you are the one who is giving exam, not me, ठीक है. Then you should have ability to self analyze. A lot of students do not have the ability to self analyze, what are the mistakes that they are doing. In that I will help, in that mentorship helps, in that guidance helps. So for that you do not have to worry. Then drive to improve consistently. You should have the motivation कि I have to consistently improve, ठीक है. In that also I'll help you. Then owning responsibility कि अगर आपका रिजल्ट बुरा आ रहा है, ठीक है, if you're getting poor marks in your tests, then you should say कि sir, there is some fault in me, there are some problems in me, and you do not give put responsibility in your parents or your environment or in your mood or anything. So be very responsible कि okay, it is because of myself that I am getting poor marks, ठीक है. And then finally follow what I have been told. So अगर मैं बोल दिया कि न्यूज़पेपर पढ़ो तो पढ़ो, don't make me say it again and again. कुछ स्टूडेंट होते हैं, आई हैव टू रिक्वेस्ट देम अगेन एंड अगेन कि प्लीज रीड न्यूज़पेपर, प्लीज रीड न्यूज़पेपर. सो डोंट बी लाइक दैट स्टूडेंट, ओके, बिकॉज इट इज अ वेरी एम्बिशियस प्रोग्राम जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. सो आई एक्सपेक्ट अ लेवल ऑफ स्किल्स फ्रॉम माय स्टूडेंट्स एज वेल, ठीक है. नेक्स्ट काइजन है क्या? इट इज अ जापानीज वर्ड विच मीन्स कंटिन्यूअस एंड स्लो इंप्रूवमेंट. आप स्लोली इंप्रूव कर रहे हो और आप कंटिन्यूअसली इंप्रूव कर रहे हो. दैट इज व्हाट काइजन इज. एज आई हैव सेड, आई डू नॉट वांट अ रिवोल्यूशनरी कैंडिडेट कि जो कोई रिवोल्यूशन लाए. आई वांट अ कैंडिडेट हु विल टेक बेबी स्टेप्स, जो कि छोटे छोटे स्टेप्स लेके एवरी डे जस्ट वो +1 जाए, +10 नहीं जाए एक दिन में, ठीक है. Just they are giving +1 every day, that is enough. The student who will be taking baby steps and they will improve their preparation one day at a time, they will qualify this exam. They have to be consistent. See, the nature of exam is कि हो सकता है एक या दो attempt में ना हो, but these people will qualify this exam if they will develop this skill, this habit, ठीक है. So I do not want any revolutionary or path breaking student, neither I will be providing any revolutionary or path breaking schedule, okay, but a cool disciplined study of the schedule. Now I will be discussing the component. If you will join Kaizen, then what you should be expecting, okay. So the first thing is mentorship. That is the hallmark of UPSC, that is the hallmark of SOMPM, sorry, कि जो भी प्रोग्राम आप ज्वाइन करोगे, this is where we shine, in the mentorship, and I will be personally guiding you 24/7 during the course of this course. मैं पूरी तरीके से अवेलेबल रहूंगा. whatever doubt you have, whatever confusion you have, you can ask me anytime. I will help you in solving those things. Even जो Phoenix के students थे, which was for prelims, even those students are in contact with me, and I'm generally guiding those students as well. So जब एक बार मैं connection बना लेता हूँ students से, then I'm always available for you, ठीक है.
Then this has been the truly game changer जो mentorship है. Lot of students who have qualified, जो जिनकी top 100 में rank आई है, they have, if you will watch the YouTube video of SOMP, they will see that they have thanked the mentorship कि it truly helped them in their success. Okay, so this is the prime जो आपका core मान लो of this Kaizen program is mentorship. ठीक है? So you will not just be taught in class. Obviously, classroom is the component of this program, but a general sense of alignment and mindset ना सिर्फ आपको पढ़ाया जाएगा बल्कि आपका mindset भी एक officer mindset बनाने की कोशिश की जाएगी, so that when you are studying anything or when you are sitting in the examination hall and you are giving exam, then you are giving it with the mindset of an examiner कि एक ऑफिसर की तरह आप वो एग्जाम को टैकल करोगे. ठीक है? Then first component is mentorship. The second component is classroom. Actually, okay. The second component is classroom. Okay. Now many students fear classes. Ki, sir, we cannot sit in classroom or it will take a lot of time. So I'm telling you, classrooms will be Monday to Thursday for 2 hours. Okay. एक शेड्यूल शेयर किया गया है, दैट शेड्यूल विल बी फॉलोड. अगर कहीं पे भी थोड़े से माइनर ट्वीक होते हैं तो देन फ्राइडे सैटरडे संडे को क्लासेस ले ली जाएंगे. सो बेसिकली इट मींस दैट आउट ऑफ 7 days you have to attend class just 4 days. In those 4 days also there is classes of just 2 hours. So 3 days you fully you can utilize 3 days in your optional, in your newspaper, in your answer writing skills and whatever you want. And GS आपको, you do not have to worry about GS because it is being covered in 2 hours. ठीक है? So you can completely devote your time in newspaper optional, जबकि आपका GS जो है वो कवर किया जाएगा. तो ये जो आपका डायलेमा होता है कि सर आई एम नॉट एबल टू गिव प्रॉपर टाइम टू ऑप्शनल और टू जनरल स्टडीज, दैट विल बी सॉल्व. ठीक है? आपका पूरा का पूरा सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस विल बी कवर्ड. इट विल बी टॉट बाय मी and some other mentors. So whole syllabus of your GS will be covered in this program in classroom. PDFs will be provided and everything will be taught in this class. जब क्लासेस होंगी उस पे emphasize किया जाएगा on important points that you should not miss, or those points which can be asked in exam, which usually जो students है वो overlook कर जाते हैं when they are, and that's why they struggle in the examination because they miss the important points that they should not have otherwise. Okay. सो क्लास में क्या रहेगा, सिंपल सी चीज है, आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा. देयर विल बी अ पीडीएफ. आई विल टीच दैट पीडीएफ. वही पीडीएफ आप प्रिंट आउट करके निकाल लो, and then all the important points that I'm telling you, you mark those in your PDF and then your PDF is ready. For example, polity है, अब polity का PDF आपके पास है. I'm teaching you polity. I'm telling you that these are the important points. Emphasize on these points. So just mark those points and then after polity is over, you have your revision notes कि जिसको आपने पढ़ा हुआ है, आपने वो रिवीजन नोट्स कर लिए, रिवाइज कर लिए. विच एवर एग्जाम यू आर गोइंग टू गिव, यू आर गुड टू गो, कि आपको पॉलिटी का फिक्र करने की जरूरत नहीं है. देन इन्वायरमेंट, सेम विथ इकोनॉमी, सेम विथ एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न हिस्ट्री. ठीक है? सो व्हाट यू हैव टू डू, जो कि क्लास के टॉपर्स करते हैं, कि जब 2 आवर्स की क्लास खत्म हो जाएगी तो फॉर 30 मिनट्स यू जस्ट हैव टू रिवाइज व्हाट हैज बीन टॉट. सिंपल सी बात है, जो टॉपर्स जो हम स्कूल्स में करते थे. ठीक है? नेक्स्ट इज टेस्ट. सो आफ्टर एवरी पोर्शन, एक सेक्शन जब कवर हो गया है टॉपिक का, फॉर एग्जांपल 25% ऑफ पॉलिटी हैज बीन कवर्ड, देन देयर विल बी अ टेस्ट ऑन पॉलिटी. ठीक है? एक जनरल टेस्ट होगा पॉलिटी में, एंड यू कैन एनालाइज योर स्कोर कि हाउ मच यू आर स्कोरिंग, वेदर यू आर स्कोरिंग गुड और नॉट, एंड देन यू कैन डिस्कस विद मी कि सर दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट आई हैव फेस्ड. सो यू आर नॉट जस्ट स्टडीइंग, आप सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे हो, but you are also looking back and understanding the mistakes that you have done in those examination. ठीक है? तो आप सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे हो, बल्कि आप एक you are looking back and you are learning from your mistakes also, which is the bigger step than just studying. ठीक है? क्योंकि सिर्फ पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता है unless you are improving every day with proper. So इस पे आपको टेस्ट दिए जाएंगे. टेस्ट will be of almost of UPSC level. सो उन टेस्ट के स्कोर के बाद हम डिस्कस करते सकते हैं कि ओके, यहाँ पे आप गलतियां कर रहे हो, दीज आर द मिस्टेक्स दैट यू आर कमिटिंग एंड दीज आर द मिस्टेक्स दैट यू शुड अवॉइड, और दीज आर द मिस्टेक्स यू आर डूइंग व्हाइल रीडिंग, सो दैट यू इन ड्यूरिंग जुलाई टू दिसंबर इटसेल्फ आपको अपनी मिस्टेक्स पता होंगे. तो वो जनवरी से जो फरवरी तक का टाइम होगा, सॉरी मई तक का टाइम होगा ना, ड्यूरिंग दैट टाइम यू कैन ट्रूली इंप्रूव. आप यू कैन एलिवेट योर प्रिपरेशन टू नेक्स्ट लेवल. ठीक है? सो इसके बाद अपार्ट फ्रॉम दीज टेस्ट यू कैन गिव टेस्ट ऑफ योर चॉइस ऑल्सो. अगर आपको कोई दूसरा टेस्ट लगता है कि आई हैव टू गिव दैट टेस्ट ऑल्सो, यू आर फ्री टू गिव दोज टेस्ट ऑल्सो. दे विल एड अ वैल्यू टू योर प्रिपरेशन. ठीक है? जो आपका फाइनल प्रिपरेशन है, दे विल एड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू दैट.
now ये जो टेस्ट हैं जो which we will provide, they are prepared with the kind of question that are asked in UPSC. तो UPSC standard के ही टेस्ट हैं, ठीक है. Then you will be getting PDF notes of whole syllabus. तो जो पूरा का पूरा आपका syllabus है prelims का plus mains का, ठीक है, it will be provided to you, so that you read those PDFs, you mark those PDF, and then you're good to go. Not just इस program को join करने के बाद you do not have to worry about not just UPSC but any other exam you're giving. Your GS part is set, ठीक है. जो ये notes हैं ये क्या हैं? ये आपके जो NCERTs हैं, old new basic books हैं लक्ष्मीकांत. So एक जो notes है, जो one PDF है, it has been taken by combining 3 to 4 sources, ठीक है. So it is an amalgamation of multiple sources. So these are very holistic notes. It will cover most of the part of your preparation, ठीक है. Excuse me. तो जो ये notes हैं, they are very high quality notes, and I have read these notes, and they have we have combined multiple sources to prepare just one notes. तो आप अगर ये notes पढ़ रहे हो तो इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है. However, few things I will recommend reading during the course of examination, और उसमें भी मैं schedule दूंगा, तो you will be forced to study those things also, ठीक है. Then there will be a newspaper session. Newspaper session, it will be on weekends. I will take for 1 hour. So in this I will tell you कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, how to skip unnecessary news, whatever news is not important for you, how to skip it. Second, how to backtrack. It means कि suppose कोई चीज आप पढ़ रहे हो, सपोज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 मेंशन्ड है उस जगह पे, ठीक है. तो हाउ टू बैक ट्रैक करके आप क्या देखोगे कि इस पे व्हाट शुड आई स्टडी मोर ऑन दिस थिंग, एंड व्हाट शुड आई फॉलो मोर ऑन दिस थिंग, सो दैट आई लर्न मोर अबाउट दिस एक्ट, ठीक है. तो हाउ टू बैक ट्रैक, दैट आई विल टीच यू. देन हाउ एंड व्हेन टू मेक नोट्स. जो नोट मेकिंग होती है न्यूज़पेपर की, दैट इज द बिगेस्ट problem that a lot of students face, कि they do not get motivation कि sir how do we make a lot of notes out of these things. So I will tell you whether you have to make notes out of newspaper, and if you have to make notes, what you have to write. So every day अगर एक पन्ना आप ले रहे हो ना, तो उसका सिर्फ 1/3 पार्ट में ही आपको नोट्स बनाना है, पूरा का पूरे पन्ने पे नोट्स नहीं बनाना है. एंड आई विल टेल यू हाउ टू मेक नोट्स आउट ऑफ देम. एंड देन फाइनली हाउ टू फिनिश न्यूज़पेपर इन 1 hour. यू डू नॉट हैव टू रीड न्यूज़पेपर फॉर 2 to 3 hours. 1 घंटे में खत्म करो न्यूज़पेपर एंड देन मूव ऑन टू अदर पार्ट ऑफ स्टडीज, ठीक है. Then there will be answer writing sessions. Answer writing session ये after 1 month, मतलब almost August end से start होगा ये, ठीक है. Answer writing session में I will tell you how to write answers for different subjects. So for example, history, your approach of writing answer should be different. For polity, it should be different. For geography, for ethics, for essay, it should be different. So I will provide a general orientation कि जब आप history लिख रहे हो तो what kind of answer you should write. जब polity लिख रहे हो, geography लिख रहे हो तो what kind of answers you should be writing. I will provide that. And then few answers I will ask you to write, and I will check those answers, and then I will provide feedback also. For example, essay आपने लिखा हुआ है, I will tell you when to write essay, when to write some answers, and उसका feedback भी मैं आपको provide करूंगा. तो there will be general answer writing sessions also, so that you learn how to write answers, ठीक है. Because टेस्ट सीरीज जो होती हैं, दे मोस्टली लर्न टीच यू द स्किल, टेस्ट यू कि आप टाइम पे पेपर खत्म कर रहे हो कि नहीं. बट आंसर राइटिंग सेशन में मैं बताऊंगा कि आंसर लिखते कैसे हैं, हाउ टू इम्प्रूव योर आंसर्स, वैल्यू कैसे ऐड करते हैं आंसर में, सो दैट यू कैन राइट बेटर आंसर्स. ओके. Then there you will have all the students who are joining this course will get access to thematic session, ठीक है. thematic session जो है ये free of cost आपको provide कराया जाएगा. thematic session क्या है? जो current affairs है of past 5 years, those are covered in this in general topics of UPSC. thematic session for mains, ठीक है. इस साल हमने pre का भी thematic sessions लिया था, और उस पे around 8 to 10 questions were directly asked in UPSC prelims. This I will share the PDF also later on. Main group में मैं share करूंगा कि इस thematic session में almost 8 to 10 questions were asked in UPSC 2022 from those thematic sessions, ठीक है. तो आपको you will get, तो आपका जो 5 साल का current affair है वो पूरी तरीके से कवर कर दिया जाएगा इस पे जो क्लासेस रहेंगी वो रिकॉर्डेड रहेंगी. ये लाइव क्लासेस नहीं रहेंगी, बट आई विल प्रोवाइड लाइव क्लासेस व्हिच आई विल टेक, बट हियर क्लासेस विल बी रिकॉर्डेड, प्लस यू विल गेट PDFs also. And what I have seen is the last जो UPSC का GS के पेपर होते हैं, GS 1, 2, 3 and 4. So
70 to 80 questions have been 80% question have been picked directly from the themes that we have discussed. तो जो भी themes हमने cover की थी उससे 70 से 80% question डायरेक्टली जीएस पे आए हैं, ठीक है। तो अगर आपने पहले से एक स्केलेटल बनाया हुआ है, स्केलेटल मतलब यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड इंट्रो, you have already prepared the body, and then you have already prepared the conclusion, so it will save your time also, and it will fetch you extra mark also, है ना। ये जो इस साल मैंने आई एम रनिंग द PSIR कोर्स, उस पे भी स्टूडेंट्स को ये चीज मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, एंड आई एम आस्किंग देम टू डू दिस थिंग कि प्रिपेयर अ स्केलेटल नोट्स फॉर द प्रेडिक्टेबल टॉपिक्स। तो जब आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन सोचने का मौका ही नहीं मिले, आपको जरूरत ही नहीं पड़े इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन सोचने का, ठीक है। सो यू विल गेट एक्सेस टू दिस आल्सो, एंड देन फाइनली यू विल गेट एक्सेस टू योर अप टू अ प्रॉपर शेड्यूल आल्सो, कि आपका जो टाइम है, देखो मेरा सिंपल सा फंडा ये है कि बाय द अर्ली दिसंबर जब ये जो आपका कोर्स है फिनिश होगा, आपका पूरा का पूरा जीएस खत्म हो चुका है, इट इज ओवर, आपका पूरा का पूरा मेंस कवर हो चुका है, यू हैव रिवीजन पीडीएफ्स, ठीक है, आपके पास मार्क्ड पीडीएफ्स है जिससे आप जल्दी रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। यू हैव गॉट अ जनरल ओरिएंटेशन आल्सो कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो चुकी है कि हाउ टू राइट आंसर्स, आपको एसे की प्रैक्टिस हो चुकी है कि हाउ टू राइट एसेस, एंड देन यू हैव रिवाइज्ड द होल सिलेबस एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स। तो आप समझो कि ये सिस्टम अगर आप फॉलो करोगे, इफ यू विल फॉलो दिस सिस्टम, देन बाय दिसंबर यू विल बी अमंग द टॉप 5% कैंडिडेट्स ऑफ यूपीएससी, कि जो टॉप 5% कैंडिडेट्स होते हैं उस पे आप हो गए। एज आई सेड कि 96% विल नेवर क्वालिफाई दिस एग्जाम, तो आप you will already be in the top 5% by the end of this। अगर इस शेड्यूल को आप रेगुलरली फॉलो करोगे, रेगुलरली क्लासेस अटेंड करोगे, एंड यू विल बी रेगुलरली इन टच विथ मी सो दैट यू कैन टेल मी व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग, ठीक है। तो इन जनरल दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस यू अबाउट काइजन 2023 2024। एज आई हैव टोल्ड यू कि जो पर्सनल मेंटोरशिप है वो वर्क करती है आज के टाइम पे। क्लासेस जो हैं, जो लॉन्ग क्लासेस है, लंबी लंबी क्लासेस है, दे आर नॉट वर्किंग फॉर स्टूडेंट्स। इन जनरली ये होता भी है कि लोग 6-6 घंटे की क्लासेस ज्वाइन करते हैं, एंड आई हैव सीन इन बिग कोचिंग 70% ऑफ द स्टूडेंट्स, 80% दे लीव द कोचिंग मिडवे, they feel that they are not fast enough because they can quickly pick up what they are teaching, and then they can align their preparation according to their own needs, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम है, ये जो सिस्टम है which in SOMP we are running, we will be running from 15th July। this is very very relevant कोर्स, ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट है और स्टूडेंट ओरिएंटेड है, टीचर ओरिएंटेड नहीं है। इट इज टू हेल्प ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ईच एंड एवरी स्टूडेंट विल गेट personal guidance from me, okay। So these are the basic aspects of the course that I wanted to discuss with you। एक question answer session कर लेते हैं, so if you want to ask any question I can answer those questions also, and after that we will end the session because I hope I have made the point clear। So if you want to ask any question you can ask them। सर ये केजन कोर्स और इंटीग्रेटेड कोर्स जो है, इन दोनों में बेसिकली क्या अंतर है? इंटीग्रेटेड में आपको क्लासरूम नहीं है, सिंपल सी चीज है। केजन में आपको क्लासरूम्स रहेंगे रेगुलर मंडे से थर्सडे, और अपार्ट फ्रॉम दैट जो जनरल ओरिएंटेशन है ऑफ जो पीडीएफ्स वगैरह आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, उसका आंसर राइटिंग वगैरह वो सब रेगुलर किया जाएगा। सो इट इज एन एक्स्ट्रा कंपोनेंट कि नॉट जस्ट कि हम गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, बट देयर विल बी क्लासरूम्स आल्सो व्हिच विल आल्सो नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अच्छा, तो सर जिसके 4-5 अटेम्प्ट हो चुके हैं, तो सर उसके लिए केजन सही है या फिर इंटीग्रेटेड सही है? डिपेंड्स ऑन योर नीड। अगर आप मिस्टेक्स कर रहे हो कि आप चीजें पढ़ रहे हो बट स्टिल यू आर मिसिंग पॉइंट्स, लाइक जो चीजें आप पढ़ते हो एंड देन एग्जाम में अगर उसी सोर्स से कोई चीज आती है एंड यू आर मिसिंग देम, इन दैट केस काइजन इज बेटर बिकॉज इट इंक्लूड्स एवरीथिंग इंटीग्रेटेड प्लस क्लासरूम। ठीक है, ओके, थैंक यू। नो, दे आर डिफरेंट। इंटीग्रेटेड और ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा जी। मेंटोर वीकली कॉल्स नहीं होते हैं सीमा, रेगुलर कॉल्स होते हैं ना। इफ यू वांट यू कैन मैसेज मी एनी टाइम एंड देन वी कैन, देयर विल बी अ टाइम एंड व्हिच आई कॉल। सो एक टाइम होता है ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड इन व्हिच वी डिस्कस, बट इट इज डेली, इट इज नॉट वीकली।
test I have discussed, these are part of the Kaizen program. So simple सी चीज है कि after classes there will be tests which you can join. Timing of classes अभी right now I have thought कि शाम को 6 to 8 PM रहेगी. Recorded classes if someone has missed, then recorded classes will also be provided. ठीक है, but then in general जब student join करेंगे और general orientation देख के then we will decide the final timing of the class. Yes, Ria, same. I think that आपने शायद PDF नहीं देखा हुआ होगा, but there is a PDF, very targeted PDF, and in a very targeted way जो है हम we will guide you. And in this program, in generally in SOMP also, we focus on each and every individual students. तो हर individual student को हमको याद होता है कि student की ये weakness है, ये strength है, and then these are the things will help those students, and they always remain in touch with us. Even after program has ended, they are in touch with us, and then we guide them even during that time also. Okay. Batch online है, it is completely online batch. Okay. सेम रहता है, बस लैंग्वेज डिफर हो जाती है. हिंदी और इंग्लिश में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है. इट इज सेम, बस आपको लैंग्वेज पकड़नी है. ठीक है, कि जहाँ पे आप हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो यू शुड बी फ्लुएंट इन हिंदी. अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो यू शुड बी फ्लुएंट इन इंग्लिश. स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक मत करो, विच इज द बेसिक थिंग. एज एन एग्जामिनर जब मैं कॉपी भी चेक करता हूँ तो दिस इज द थिंग दैट इरिटेट्स मी अ लॉट. इफ यू आर मेकिंग अ लॉट ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक्स या अगर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर रहे हो, ठीक है, तो यू शुड अवॉइड दोज थिंग्स. Cost I think 34,000 plus 18% GST. I will put, अभी हम PDF फिर से डाल देंगे, so you can see everything about this course. ठीक है, if you want to ask anything you can ask, otherwise we will end the session, because in general yes, the course will include test series also. I have discussed this कि class certain section जब हम class का cover करेंगे, after suppose हमने फंडामेंटल राइट्स तक पढ़ाई कर ली, ठीक है, तो एक टेस्ट होगा टिल योर फंडामेंटल राइट्स. उस टेस्ट को हम एनालाइज करेंगे. वी विल सी व्हाई यू आर स्कोरिंग गुड और व्हाई यू आर नॉट स्कोरिंग गुड. देन वी विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट. देन वी विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट. ओके. Sir, notes will be provided for mains. Yes, for prelims there will be different notes. For mains it will be different notes, and for both notes will be provided. For prelims also, for mains also. For both topics notes will be provided. सो अगर आपको कोई क्वेश्चन है पूछो, डाउट मत रखो या कोई हिचकिचाहट मत रखो, बिकॉज इट इज योर लाइफ, इट इज योर एग्जामिनेशन, विच आपकी लाइफ है, आपका एग्जाम है. तो अगर आपको कोई चीज लगता है कि आपके दिस प्रोग्राम विल हेल्प यू एंड इफ यू वांट टू क्लियर certain things, you should ask me so that I can help you. Otherwise we will end the session now. एथिक्स की क्लासेस होंगी, ठीक है. कुछ क्लासेस थीमेटिक में कवर करेंगे, कुछ आई विल टेक. सो क्योंकि पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं ना, तो इट विल इंक्लूड एथिक्स आल्सो. एंड हाँ, आई विल पर्सनली बी सुपरवाइजिंग योर टेस्ट्स, है ना. सो आई विल बी लुकिंग आफ्टर दिस टेस्ट. मैंने ये चीज फिनिक्स पे भी की थी और इस पे भी सेम पैटर्न रहेगा. Okay, so I'll take 30 seconds more if you have any other question. शेड्यूल सीमा, आई थिंक चलो मैं अभी फिर से हम डाल देते हैं, ठीक है. ग्रुप में मैं फिर से फाइनल PDF जो कंपोनेंट्स हैं वो, और उसके साथ जो शेड्यूल वगैरह है वो सब डाल देते हैं, तो सो दैट इट विल बी क्लियर फॉर यू ऑल. वो शेड्यूल पूरी तरीके से फॉलो किया जाएगा. एक प्रॉपर टाइम बना के हमने बनाया हुआ है वो. रिमेंबर, जो ये शेड्यूल अभी हम शेयर कर रहे हैं, इट इज ऑफ प्रीलिम्स. एक पैरेलल शेड्यूल हम विद इन 1 month वी विल शेयर ऑफ मेंस आल्सो, है ना. सो दैट कि प्रॉपर एक टाइम दिया जाए बिटवीन टू थिंग्स, है ना. देखो, क्लासरूम की स्ट्रेंथ तो कुछ भी हो सकती है ना, बिकॉज क्लासरूम में तो कितने भी स्टूडेंट बैठ सकते हैं, बट जो मेंटोरशिप रहती है, इन जनरल 20 स्टूडेंट्स एक मेंटोर देखते हैं ना, दैट इज द थिंग.
CSAT की classes there will this is just for your GS जो pre और mains है उसके GS के लिए there are no CSAT classes in this, okay, because it is a completely different sphere. See, this is not integrated batch. I मतलब ठीक है, I will try to एक मैं point डाल के I will try to make it clear also, but ये integrated batch नहीं है, ये एक पूरा का पूरा hand holding आप समझ लो. Integrated में we usually give target to student और एक orientation लेते हैं. इस पे जो है ये hand holding, इसमें पूरी तरीके से we will make you cover the whole syllabus, है ना? So it is consider it like integrated plus classroom. In that way, do not confuse it with integrated, that is different course. Yes, it will have essay sessions also, है ना? ऐसे कैसे लिखते हैं, what should be the chain of thinking, how to break the chain of thinking, जिसके कारण बहुत सारे जो students they are stuck in 120 to 125 marks, वो भी हम discuss करेंगे उस पे. Every aspect will be covered. That is the main idea of this, कि by early December जो आपका एक major section है ना, almost 70% of your preparation is over by the December, by early December. सीमा, आई थिंक एक बार आप इंटीग्रेटेड के पीडीएफ्स हैं, जस्ट लुक एट दोज एंड देन इसका पीडीएफ है, इसका आप देख लो. सो आई थिंक इट विल मेक इट मोर क्लियर टू यू कि व्हाट इज द डिफरेंस. ये दिस इज अ क्लियरली गाइडेड प्रोग्राम कि जिसपे फॉर एग्जांपल, चलो मैं आपको समझा देता हूँ कि सपोज वीक 1 में हम टिल फंडामेंटल राइट्स या फंडामेंटल ड्यूटीज तक पढ़ रहे हैं, ठीक है, या ओशियंस पढ़ रहे हैं हम इन फिजिकल ज्योग्राफी, ओशियंस और लैंड फॉर्म्स पढ़ रहे हैं, ठीक है. तो 4 दिन हम क्लासेस करेंगे, 5वें दिन हम उसका टेस्ट लेंगे. वी विल एनालाइज कि हाउ यू आर स्कोरिंग, ठीक है. उस टेस्ट पे हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई यू आर स्कोरिंग लेस, व्हाई यू आर स्कोरिंग मोर. सो इट इज अ कंप्लीट पैकेज इन विच एवरी पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन विल बी कवर्ड, ठीक है. इंटीग्रेटेड जो होता है, इट इज मेनली उस पे हम ये एक्सपेक्टेड रहता है कि स्टूडेंट को बहुत सारी चीजें पता है एंड वी विल जस्ट प्रोवाइड अ जनरल orientation to that student कि ये कर लेना, ये कर लेना, और कुछ हम सेशंस ले लेंगे. So those are for different students, this is for different students, okay. This is to comprehensively cover your syllabus. So any more questions if someone want to ask? No, it's fine. No doubt is silly doubt. किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना है? ओके, आस्क प्लीज. आप पूछ लो कोई भी. देखो, कोई भी क्वेश्चन एब्सर्ड या सिली नहीं होता है ना. एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज इट इज अ लर्निंग फॉर अस आल्सो. दिस I have no idea. आप फी के बारे में पूछ रहे हो ना. To be honest, I'm not even part of integrated program. So, and I am not the one who is deciding the fees. So, I have no idea why is it like that. Okay, but you can ask other people. They must be knowing about this thing. But again, I hope I have made it clear कि this is not integrated. This is different program. Okay. Actually, prelims, when we ran prelims, it was good because there was just one program which I was running, so there was no confusion among students कि केवल एक Phoenix ही था, कोई और program था ही नहीं. And even जो integrated के कुछ students they used to sit in those classes, in Phoenix classes. But ये program because integrated से थोड़ा सा clash हो रहा है, so I can understand the confusion. But I hope I have made my point clear. Okay. Chalo then, we will end the session now, and I hope I have answered most of your questions. अगर आपको कुछ भी doubt होता है तो you can contact me, okay, and I can this thing I can. So my ID is at
this. So you can ask your question on this ID. Okay. And if you want to join, or if any other query you have, then I'll share the link SOMP inquiry, in that you can ask whatever queries you have. Okay. So thank you. And I hope that this discussion was fruitful for all of you.